Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. I hope that you all are doing well in your home and enjoying our lectures, our daily video lectures. So I am here for the lecture number 1 of week number 2, and that is unit number 8, stopping by words on a snowy evening. This is the second poem of the English 9th class BTB book. As you know that the first poem is Daffodils. There are only 2 poems in your book. The second poem is Stopping by Words on a Snowy Evening, written by Robert Frost. As you all know that poets are very much necessary. So let me explain about the poet. Who is the Robert Frost? Robert Frost is basically a famous American poet who was born in San Francisco. He has got 4 times award on his poetry that is focused on the theme of a nature. So basically you can say that Robert Frost is the poet of nature. He loves to describe the nature in his poetry, as the name of the unit number 8 suggests that stopping by words on a snowy evening, that means एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना. So let's start our poem, that is page number 82, and it has 4 stanzas. Let's start and see what the poet says. Here I think he is experiencing a visit to a jungle. Let's start. Whose woods these are? I think I know his house in the village though. Woods mean jungle, दो mean अगरचे. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. His house in the village though. अगरचे इसका घर गांव में है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow. ना ही अपना बर्फ से भरा हुआ जंगल देखेगा. So basically in the first stanza, the poet is saying कि he knows that whose jungle is this. पोइट कह रहा है कि मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ ये किसका जंगल है, और जिसका जंगल है उसका घर जो है वो शायद गांव में है. और पोइट कहता है कि उस बंदे को, उस शख्स को नहीं पता कि मैं उसके जंगल में रुक रहा हूँ, और ना ही वो अपने बर्फ़ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा. My little horse must think it quit to stop without a farmhouse near. Now he is sharing the feelings of his horse. अब आप यहाँ देखें कि पोइट अपने छोटे से घोड़े की फीलिंग्स को किस तरीके से बयान करता है. वो कहता है कि मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है. क्विट मतलब अजीब लगना. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रुकना. बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जंगल और मंजुमत झील के दरमियान. फ्रोजन लेक बर्फ़ से जमी हुई झील के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट मतलब तारीक तरीन शाम, साल की तारीक तरीन शाम को. ही इज़ सेइंग दैट कि मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है कि जंगल के पास बग़ैर फार्म हाउस के रुकना, साल की तारीक तरीन शाम को जंगल और मंजुमत झील के दरमियान. ही गिव्स हिज हैंड्स बाय अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक. वो अपनी सांस की घंटियों को ज़ोर से हिलाता है ये पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं. अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि पोइट बताना चाह रहा है कि उसके घोड़े को ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि इतनी रात को, इतनी सर्द रात को हमारा यहाँ पर रुकना कोई गलती तो नहीं. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. और आने वाली मज़ीद आवाज़ें तो बस हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की हैं. यानी कि वहाँ पर जो दूसरी आवाज़ें आ रही हैं वो सिर्फ़ हल्की हवा की हैं और बर्फ़ के नरम गालों की हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. जंगल दिलकश, तारीक और घना है. लवली दिलकश, डार्क घना, डीप घना, डार्क तारीक.
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है. यू कैन सी देयर दैट पोइट वॉन्ट्स टू स्टे. पोइट यहाँ पर रुकना चाहता है, बट ही हैज़ सेड दैट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. मुझे बहुत से लोगों से किए हुए वादे निभाने हैं. एंड आई हैव टू गो, और मुझे जाना है. सो दिस इज़ द बेसिकली थीम ऑफ द poem, that is the focus on the nature. I hope that you people have learned. आपको समझ आ गई होगी. Now we will move towards our glossary and the question answers session. Glossary. There are 5 meanings in the glossary that you have to learn. Woods mean forest यानी जंगल. Queer मतलब strange यानी अजीब. Hans का मतलब होता है कंट्रोल करना. Downy soft मतलब हल्का सा. फ्लेक वेरी स्मॉल लूज मार्स ऑफ स्नो यानी कि बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा हल्का सा स्नो का यानी कि बर्फ़ का गोला. सो these are the glossary meanings that you have to learn. Now let me explain you the summary of the poem. The summary of the poem basically revolves around the stay of the poet in the snowy evening. You have this poem summary in your ALS notes, but I will explain. The poem Stopping by Words on a Snowy Evening has been written by Robert Frost. ये मैं आपको summary explain कर रही हूँ. आपके पास ये जो summary है, you would have this summary in your ALS English notes. ठीक है, आपने ये वहाँ से याद करनी है. Let me tell you the central idea of the story of the poem. It tells the story of a man who is traveling to his hometown. When he reaches the woods, he is enchanted by its natural beauty. He wonders whose woods are these. He knows the owner who is living in the nearby village. His horse is thinking it's strange to stop by the woods while there is no farmhouse in the sight. His horse gives a shake to the horn spell. There is a frozen lake and snowflakes to be seen. Wind is passing through the trees. The woods are lovely, dark and deep, but the poet had so many things to do and he has many miles to go before he can go to bed for sleeping. So this is basically a poem all about. You have to learn the summary, you have to learn the glossary, and this is the lecture number 1 of week number 2. In lecture number 2 we will discuss the answer of the following question. Yes, we will discuss in our lecture number 2. So this is it. Hope you all will enjoy the lecture. Stay blessed, stay home. Allah Hafiz.